Germany, we were able to get France, we were able to get European Union, we were able to get Russia. Sir, अगर आप रशिया का देखें, President Putin has said that this brutal crime has no justification whatsoever, and its perpetrators will face a deserved punishment. So, sir, I want to say that in terms of diplomatic support, we were able to get a wide range of countries, including our neighbors. Every one of our neighbors, barring Pakistan, issued a statement expressing solidarity, condemning Pahalgam. So, a lot of them said explicitly that people should be brought to justice. So, I do want to say that in terms of diplomatic understanding of what was happening, that let me speak. In such kind of noise, it's all people are on this matter. No. आप सभी लोग एक साथ खड़े होंगे. मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसको अलाउ करूं? आई कैन नॉट. प्लीज, you all sit. Please. Yes, Sushmita ji, tell me. Honorable Minister, just a minute. You tell me point of order. Sir, Rule 240, irrelevance or repetition. The chairman, after having called attention of the council to the sir, he is repeating everything that is... Honorable Minister, it's irrelevant. Please. Please take your seats. Honorable Minister. ठीक है सर, डिस्टर्ब नहीं होते. आप कंटिन्यू करिए. मैं सर डिस्टर्ब वो लोग होते हैं सर. वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं. तो सबको समझना चाहिए. सर lot of questions have been raised about how Operation Sindhur progressed. I don't want to say very much, sir. I just make 4 points. One, anybody who wants to see, who wants to judge what was the success of Operation Sindhur, please go to YouTube and look at the funerals which were taking place in Pakistan. When you see whose funeral, who's attending, you get the answer. Number 2, if you are still not satisfied, please go to YouTube again and please look at the pictures of Pakistani airfields. Please look at the Pakistani airfields. Please see the destruction of Pakistani airfields, and you will see how successful Operation Sindhur was. Now, sir, there were 2 great centers of terrorism. 2 great centers of terrorism. दुनिया जानती है सर, हम सब लोग जानते हैं. पिछले 25 साल से सब जानते हैं सर, भावलपुर और मुरीद के. They have been the biggest centers of terrorism directed against India. Today, sir, Bhavalpur and Murid are reduced to dust. Point of order, disorder create करने के लिए I am not interested. Please, Honorable Minister, Minister रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आप अपनी जगह बैठ जाएं. आपको बोलने का जब मौका आएगा अपनी बात कहेंगे. No, you cannot do. Please. So, sir, I want to say this. Nothing is going on record your For decades, Bhavalpur and Murid were considered the biggest centers of terrorism, not just in Pakistan, for global terrorism. So let me tell you, when we hit Bhavalpur and Murid, the whole world thanked us for what we did. We did a global service. When we reduced it to dust, when those funerals were taking place, when people came to cry over those dead terrorists lying around,
That was the success of Operation Sindhur. Now, sir, sometimes people are determinedly skeptical because if government does something, wo us side baithe hain, they cannot bring themselves to believe it. So I want, sir, to quote from people who are involved on the other side. Sir, Prime Minister Shehbaz Sharif says, our armed forces were prepared to act at 4:30 in the morning after Fajr prayers to teach a lesson. But before that hour even arrived, India once again launched a missile attack using BrahMos, targeting various provinces of Pakistan, including the airport in Rawalpindi and other places. This is the Prime Minister of Pakistan admitting. People are skeptical कि भाई success हुआ नहीं हुआ. Now, he says again, sir, General Munir called me on secure line and said India's ballistic missiles have hit the Noor Khan air base. So when people ask, sir, what brought end to fighting? What brought cessation of fighting? Sir, the Indian armed forces did not require anybody else. The Indian armed forces achieved that. Anybody, I want to say this, sir, anybody who says that some other party brought this about is disrespecting the Indian armed forces. The Indian armed forces ensured this. It was our bombing, it was our strikes, it was our destruction of the airfields. That is what happened on 10th May. That is why the phone call came. That is why they said, okay, we are now willing to accept this. So, I think when people, for scoring political points, should not get so carried away that they then decry the great achievements of the Indian Armed Forces for which we are all gathered here. I mean, how low can your politics go? So, sir, I want, sir, to now come to where we are. Now, I used, sir, the word new normal. I understand there were some objections. Some people thought it's not the right word. I will rephrase it, sir. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Okay? And let me tell you, sir, what is the Modi normal? The Modi normal is terrorists are not proxies. Number two, cross-border terrorism will get appropriate response in our way at our time. Three, talks and terror will not go together. Please, John Britas. If there are talks, it will only be about terror. Number four, we will not give in to nuclear blackmail. And number five, terrorism and good neighborliness cannot go together. And therefore, sir, blood and water will not flow together. And I know some members raised some issues about it, but I want to say, dams may have taken years to build before. This is Modi government. Things are different. You will see the change on the ground. And again, I repeat, blood and water will not flow. Now, sir, some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया. तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी. अब सर इनको छोड़िए. इनके अलावा एक और चाइना गुरु है. अब सर अब ऐसा है सर. जयराम जी. सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर
One, I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर. I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ. अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते. और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे. तो उसको मैं छोड़ देता हूं सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में. पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है. तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं. तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं. तो अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए. सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी. हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू. 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया. 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई. 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर. 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी. 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर. और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76 10 साल बाद. तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट. अब आगे बढ़िए सर. 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर. 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर. 2008 में काम शुरू हो. तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे. पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे. आपको पता है. तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ. और मैं जानता हूं सर, उसमें चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना घोषित किया गया सर. स्ट्रेटेजिक पार्टनर सर, हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमांड के जनरल थे. जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए. आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमैट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से. देखिए इस दशक में और क्या हुआ. इस दशक में 2006 में इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट. बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात एक बात आपकी नहीं जा रही सर. 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए. हाँ सर, 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे. इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई. टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो फिर आपने टेलीकॉम Please take your seat. Please take. No, you cannot. Telecom. When your opportunity comes, you speak. No.
टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान पर आज सर मिस्टर जॉन प्रकाश प्लीज टेक योर सीट। आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए प्लीज टेक योर सीट। नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके प्लीज। आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स प्लीज। आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है, आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा प्लीज। सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान, कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बानटोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि ये 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई। और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए सर, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन से मिले इसको डिस्कस करने? तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया? सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of 3 mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. Sir, please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please, sir. No, please. Because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु किया, चाइना गुरु करते. अब सर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही थी. ये कुछ लोगों का मत था कि भाई कब रिकवर होगा, और जैसे राजनाथ जी ने कहा सर कि हम पूरा विश्वास है सर कि एक दिन जरूर होगा. और ये सदन की सोच भी है, ये खाली मेरी सोच नहीं है, न सरकार की सोच, ये पूरे सदन, पूरे देश की सोच है. पर मैं सर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम कहते हैं 47, 48, 49 में बात बनी सर, पर सर 63 में नेगोशिएशंस हुए इस पे. 65 में हाजीपीर की बात हुई सर, लौटाया गया. 72 में जो जमीन जो हमारे हाथ में था वो भी लौटाया गया. तो आज जब लोग पूछ रहे, जिनके मन में कभी कल्पना नहीं थी कि भागलपुर और मुरीद के गिराएंगे, जिन्होंने कहा कि बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद मुंबई इज इनएक्शन, that we should not go to war because that is not attack Pakistan because better option than attacking Pakistan.
वो लोग सब पूछ रहे हैं पीओके के बारे में। कैसा सवाल है उनसे? और सर यूएस और पाकिस्तान की भी बात कहीं जिक्र हुई सर यूएस और पाकिस्तान, अब सर ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच कुछ और है, अमेरिका की सोच कुछ और है। ये आज की बात नहीं है। So historically, we have had a different view, we have had different policy, we have had different interests. And it has been a problem between India and United States. Not today, not between this government and that administration, previous government and then administration also. I have been in the room, sir. I have been in the room when America was taking up the case of General Musharraf and asking for concessions on Kashmir. So I want to say this, that on this issue, we have a national policy. No mediation is a national policy. Bilateral dealing is a national policy. I hope today terror, no talks without, that is no terror, only then talks will also be a national policy and everybody will agree. So it is not the first time that we have had differences with the United States. So there were some other questions which were raised about US. You know, have we stood up and taken up various issues? Sir, I would like to inform the House through you, sir. Every issue that we have had with the United States, we have had no hesitation taking up. We took up deportations. Today, we do not have that problem. We took up visas. We took up the cause of students. Now, Mr. Chidambaram requested whether we should take up Harvard, sir. मैं तो JNU का पढ़ा हूँ, sir. मैं Harvard का नहीं हूँ. So I hesitated to take up Harvard. And sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest. We have the ability to stand up to wherever we have to, on whichever issue we have to. So what is important today for the House to recognize is Operation Sindhur today is a well-considered, thought-through response. It was a response to this barbaric attack in Pahalgam. But today it has become the basis for a new policy. That basis, what I called the new normal, the Modi normal, is something which has been communicated very clearly to Pakistan and to the world. And finally, sir, let me end my remarks with a very, very sincere expression of appreciation for all the members of Parliament and for those outside Parliament as well, who joined the parliamentary delegations. I think each one of them, sir, each one of them, whether it is Shashi Tharoor ji, whether it is Kanimori ji, whether it is Ravi Shankar Prasad ji, Baijan Panda ji, Sanjay Jha ji, sir, Supriya Sole ji, or Shrikant Shinde ji, sir. Every one of them and all the members, every member took a united stand abroad. They did our country proud. Yes. They answered all doubts. And I can tell you from every country, they visited 33 countries. Yes, John, yes, John, you know, I thank you too. So, sir, I don't want to read out everybody's name. I would like to read out, but sir, samay ki seema hai. But again, I want to say this, sir, very, very sincerely, that they have done a great national service. They showed a united spirit, and we hope that that is the spirit with which the nation will support Operation Sindhur. Thank you. दोला सेन जी, प्लीज आप बंगला में बोलेंगी, प्लीज स्पीक. No, nothing is good. Please, you speak. You speak. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me chance to speak on this subject. And thanks to my party, All India Trinamool Congress, and our respected leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me opportunity to speak. I will try to deliver my speech in Bangla, our beloved mother language.
খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার যে বিরোধীরা দাবি করা সত্ত্বেও সংসদে স্পেশাল সেশন না হলেও শেষ পর্যন্ত 3 মাস পরে সংসদের অধিবেশনে যে এই বিষয়ে 2-3 দিন ধরে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, এমনকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথাতেও এতজন নিরীহ নাগরিকের, মানুষের, দেশবাসীর মৃত্যুতে কোনো দুঃখ প্রকাশ শোনা গেল না। এনাদের কোনো খারাপ লাগা নেই। ইটস নট অনলি দ্যাট দে আর নট ফিলিং গিলটি, দে আর নট ইভেন সরি। সো আনফরচুনেট স্যার। মানবিকতাহীন, মনুষ্যত্বহীন এই শাসক দল বিজেপি। লজ্জা লজ্জা। সদনে দাঁড়িয়ে বিদেশ মন্ত্রীও অসত্য বলছেন স্যার। অসত্য 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 অসত্য। সো স্যাড স্যার। কি দুঃখজনক যে যখন পহেলগাঁও যুদ্ধ, অপারেশন, সব প্রশ্নে আমাদের বিরোধীদের স্ট্যান্ডই ছিল ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার, তখন অকারণ বিরোধীদেরকে দায়ী করে খুব ছোট নিম্ন স্তরের রাজনীতি করলেন সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী। একবারও বললেন না ইন্টেলিজেন্স ফেলিওরের কথা বা হোম মিনিস্ট্রি কোনো বিন্দু মাত্র দোষ আছে, দায় আছে, দায়িত্ব আছে, যার জন্য পহেলগাঁওতে এতজন নিরীহ নাগরিক, পরবর্তীতে পুঞ্চ, রাজৌরি, জম্মুতে আরো কতজন নিরীহ সাধারণ মানুষ, কত সেনা জওয়ান, আর্মি অফিসার, পাইলট সহ আর্মির পদাধিকারীরা প্রাণ গেছে, তাই তারা দুঃখিত না। কোনো দুঃখ প্রকাশ নেই এনাদের। 26/11 পর কিন্তু 4 দিনের মাথায় 30 নভেম্বর 2008 তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, মুম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ছেড়েই দিন, গোয়েন্দা প্রধানের মেয়াদ বাড়লো, চাকরির পুরস্কৃত হলো। ছি ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার পহেলগাঁওয়ের ঘটনার ঠিক আগে 3 দিন ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে, কি সব যেন ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত বড় ব্যর্থতার পরেও এত অ্যারোগ্যান্স, অহংকার, ঘামন্ড। স্যার, জাস্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, কন্ডেমেবল, ভাবা যায় না। 370 ধারা তুলে দেওয়ার সময়ও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে ট্রেজারি বেঞ্চ রাজ্যসভা থেকে আমাদের মতো অনেক বিরোধীকে সাসপেন্ড করেছিল, তবে তা পাশ করতে পেরেছিল। তখন কি ঘোষণা ছিল তাদের? এর ফলে জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাস শেষ হবে, ভূস্বর্গে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা হবে, শান্তি আসবে। হয়নি তো। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা তো ওদের ওই দাবিকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। তবুও ওরা লজ্জা পেয়েছে কি না? কেন? কেন গোয়েন্দা বিভাগ আগাম খবর দিতে পারেনি? কেন ঠিক তখনই বৈশারণ ভ্যালিতে কোনো পাহারাদার ছিল না? কেন পর্যটকদের সব ঠিক হয় বলে অ্যালাউ করা হলো? কেন এতজন মারা গেল? কে উত্তর দেবে? পুলওয়ামার মতো পহেলগাঁওয়েরও কোনো দিন কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার। 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস পার হয়ে গেল, 100 দিন হয়ে গেল, যারা সন্ত্রাস করছে তাদের কোনো খোঁজ ছিল না। যেই আলোচনা শুরু হলো সংসদে, অমনি তাদের 3 জনকে খুঁজে পেয়ে মেরে দেওয়া হলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাহলে এদের অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছিলেন স্যার, যাতে ঠিক আলোচনার সময়ই মেরে দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন? সো অ্যাস্টনিশিং স্যার। নইলে এত বড় কোইন্সিডেন্স কি করে হয়? 370 কি, কেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে একটা নির্বাচিত সরকার করেছিল, সেই ইতিহাসকে মুছে দিয়ে, ভুলিয়ে দিয়ে আর একটা সরকার তাকে একতরফা তুলে দিল। কাশ্মীরিয়াত, কাশ্মীরের অধিবাসীদের যে নিজস্বতা, তাকে বারবার আঘাত করেও কি এই সরকার আরো বেশি করে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করছে না? লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে জম্মু কাশ্মীর গিয়ে শ্রীনগর, ডাল লেক, পহেলগাঁও, সোনমার্গ, গুলমার্গ, জম্মু সব জায়গায় একটা কথাই বলতে শুনেছি ওখানকার সাধারণ মানুষকে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের এই স্টেটহুড তাকে ডিমোশন করে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া হলো, এটা মানতে পারছি না। ঠিকই তো, এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সময় জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মত নিতে একটা গণভোট নেওয়া উচিত ছিল নাকি? আমরা কৃতজ্ঞ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে। ধর্ম জেনে বেছে বেছে আত্মতায়ীরা হত্যা করেছে, এটা জানার পরেও এই সন্ত্রাসবাদ রোখার জন্য তারা মুখ খুলেছেন, এক হয়েছেন, মিছিল করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, ভূমিকা নিয়েছেন। উই স্যালিউট দেম। কাশ্মীরকে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলেই তো শুধু হবে না, ওখানকার দিন আনি দিন খাই গরিব মানুষগুলি যাবেন কোথায়, খাবেন কি? পর্যটনই সেখানে বাঁচার খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, আর তা তো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তখন বাঁচার উপায় কি? খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রধানমন্ত্রী, মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, বিকশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনেক লম্বা ভাষণে এই সমস্যা বা সমাধানের কথার উল্লেখও আমরা শুনিনি। সেম সেম। তিনি বললেন কোন দেশের কোন নেতা নাকি তাদেরকে যুদ্ধবিরতি করতে বলেননি, আর তার মুখে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা গেল। কিন্তু স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে একবার নয়, দুবার নয়,
একাধিকবার বারবার বলেছেন তিনি নাকি বাধ্য করেছেন এই দুটি দেশকে যুদ্ধবিরতি করতে, সিজ ফায়ার করতে। এর উত্তরে এতদিন ধরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিছু তো বলেনই। সংসদে দাঁড়িয়েও বিশ্বগুরু 56 ইঞ্চি ছাতির আমাদের গর্বের প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে সিনা টান করে বলতে পারলেন না কেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অসত্য, তা অসত্য। কালকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর একই কথা বলেছেন। তাহলে কে অসত্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট না আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী? আরে যতই হাততালি দিন না কেন, আমরা নতুন করে শিখছি আমেরিকার প্রেসিডেন্টই আমাদের হত্যাকর্তা বিধাতা, তিনি যা বলবেন তাই হবে। দুটো দেশের কোনো ক্ষমতা নেই নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেটাবার। আচ্ছা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে গেলেন কেন, চেপে গেলেন কেন, এত ভয় কিসের? বিদেশি পণ্যের জন্য ভারতকে বেশি শুল্ক দিতে হবে, এই হুমকির কাছেই কি আমরা মাথা নোয়ালাম? সো আনফরচুনেট স্যার। 2008-এ কিন্তু মনে আছে আমাদের, তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদিজি মুম্বাইতে গিয়ে ট্রাইডেন্ট হোটেলের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিজেপি, ব্রুটাল টেরর, স্ট্রাইকস অ্যাট উইল, weak government, unwilling and incapable, fight terror, vote for BJP. This was the advertisement of BJP. সব ভুলে গেলে চলবে নাকি? There should be a limit of hypocrisy, isn't it? আমরা তাই স্পষ্ট করে বলছি, এই সরকারের হাতে কিন্তু রক্ত লেগে আছে। তাই দেশ ও দেশের মানুষ তার জবাব চায়, স্পষ্ট জবাব। এই অহংকার, অ্যারোগ্যান্স শেষ কথা বলবে না। 303 থেকে মানুষই 240 করেছেন, মানুষই এরপর 200 নিচে নামাবেন। আর শেষ কথা, পশ্চিম বাংলাকে কারা যেন পশ্চিম বাংলাদেশ বলছেন, কে যেন বলছেন, প্লিজ, টাকা দিয়ে বাঙালিকে কেনা হচ্ছে, বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে। 1 minute sir, 1 minute, 1 minute, we will adjust with our party time. Please finish. বাংলায় সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে বলে কারা যেন গলা ফাটাচ্ছেন। ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্টের রাজ্যে কারা যেন বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকের অত্যাচার হচ্ছে, এসআইআর এর নামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এনআরসি চেষ্টা। Thank you. It's not the subject. NR Ilango, please. No, I'm calling Mr. NR Ilango. Please. No, it's please. Honorable Deputy Chairman, thank you for your... Please. Your time is over. No, stop. Your time is over. Stop my clock. Your time is over, Dolaji. No, your time is over. One, please. Dolaji, please. Conclude. Dolaji, please conclude. Dola Senji, please conclude. তাই দেশের মানুষের 350 কোটি টাকা খরচ করে 33টে দেশে বিশ্বগুরু ঘুরে বেরিয়েছেন, তারা একদলও ভারতকে সাপোর্ট করেনি। পৃথিবীর ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে উৎসাহ, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় কোনোদিন শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে Mr. NR Ilango, you speak now. You speak. Deputy Chairman, thank you for this opportunity to speak on this subject. Sir, it's not going on record. My time is to be stopped. It's started to speak. That will go only on the record. Nothing else is going on record. Please. Sir, the basic view of our party, time is to be readjusted. Please. The view of our party and our leader are that terrorism, whether internal or cross a border, shall not be allowed. The sovereignty of India shall not be intruded by any country in any manner, and if anybody does, they must be taught a lesson appropriately. The cross-border terrorism must be necessarily erased from the face of the earth. The people of Tamil Nadu will be the first to lay down their lives to protect our mother nation. These are the views of our party and our leader. So in fact, Tamil Nadu is the only state which had a rally led by our CM to show our solidarity to the army. No other state has done. Sir, coming to the discussion, I had the benefit of hearing the ministers. Most of them spend their time in accusing the Congress and their rule. They very hardly reply to the questions which are raised. Sir, the External Affairs Minister said that there was a diplomatic success of the government in TRF being declared as a foreign terrorist organization. We appreciate that development. But the External Affairs Minister, the Honorable Home Minister and the Prime Minister in the Lok Sabha has not said anything about what
the President Trump said that he negotiated the deal between India and Pakistan. So we don't want these lectures for hours together. We want only one sentence from the Union government saying that what Mr. Trump says is incorrect. What Mr. Trump says is a lie. Make that statement. There is no other further discussion is required. Sir, in Tamil, in Silappadigaram, there is a say, Arasiyal Pazhittorkku Aram Kootragu. Sir, which means virtue will punish those who are err in politics. In fact, I am not giving the literal translation. If you are not coming with the highest standard of virtue while answering this debate, then the same virtue will punish you. That should be kept in mind. Whatever they say are out of context quotes and off truths. Sir, now coming to the question of Operation Sindhur, the Home Minister, the Defense Minister was saying that the question, what should be asked by us, not how many flights we lost. The question should be asked, how many Pakistani flights were shot down. That is what he says. Sir, as far as the question is concerned, if the loss of flights are due to the strategical mistake of any human, it is very much understandable. Quite often mistakes happen. But if it is relating to the competency of the Rafale flights, then everything is a problem. The sub-questions would be, who had evaluated the competency of Rafale flights? Who had authorized their purchase? And how will you be protecting our great nation with these flights? If it is relating to the competency, should not there be a fresh and proper investigation regarding the purchase of Rafale deals? When the external affairs, sir, that is the first question to be answered as far as the flights are concerned. Sir, then, as far as the Defense Minister's statement that the identity of these persons, 3 persons who were killed yesterday, was found through identifying the rifles first. I read in the newspapers today that the rifles were flown from Srinagar to Chhattisgarh, Chandigarh, and the flight, the shells, empty shells and the site of the attack were compared. That's the best way of forensic science comparison. That is like a fingerprint matches. That's 100% proof. I agree with that. But what that establishes is the identity of the weapons, not the identity of the terrorist. Sir, do we here believe that from the date of attack at Pahalgam, these 3 terrorists were roaming around that very same place, having a cup of tea in every tea stall, to be identified by some other people? Sir, you have 2 accused in your custody for the past about 20-25 days. Why not the NIA bring them and identify the dead bodies? That's the best proof. Now these 3 persons who are killed, whether they are the terrorists or not, nobody knows. Their identity of the accused is not yet established 100%. By probabilizing, by putting materials here and there, you try to convince that these are the 3 persons who are involved. But the best evidence which is available, by showing these dead bodies to the accused in your custody, you have not established the identity of the terrorist. So I'm not going by the standards of the High Court or Supreme Court. I'm going by the standards of a normal, prudent man. There are answers which are yet to come from the Union to establish these are all the terrorists and we have dealt them according to law. That is not happening. Sir, my request are this. Please come with the whole truth. Don't accuse the rulers, the party which was in power in earlier times. That is not, we are not here for that. 3, these off-truths, these quotes out of context will not help this discussion. Again I am saying, and I am finishing my statement by saying, Arasiyal Pazhittorkku Aram Kootragu. If you are not coming with the highest standard of virtue, the same virtue will definitely punish them. Sri Mastan Rao Yadav Bida.
opportunity, I, on behalf of our party, Telugu Desam Party, and our leader, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, rise to speak on the subject Operation Sindhur that was launched by the Indian Armed Forces on May 7, 2025, in the immediate aftermath of Pahalgam terrorist attack that snatched away the lives of 26 innocent civilians from across India. I would like to take a moment to pay my respect to the innocent lives lost, sir. There are moments in the nation's history that don't come softly. Pahalgam was and will always be one such moment. Sir, India's foreign policy is shaped around the concept Vasudhaiva Kutumbam, which means the world is one family, and our country has done its best to spread this philosophy. But sir, every family has that one person who will do everything in their power to cause trouble and then play the victim. Only one country comes to my mind, is Pakistan. For far too long, we have been told to keep calm, show restraint, and turn the other cheek while they go about causing mayhem, taking innocent lives, and blatantly harboring terrorists. It truly, sir, terror's own country it is. I am proud to say that in this new India, under the guidance and the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we will no longer sit quietly. Instead, we shall respond in swift, precise, and strategically calibrated manner. Operation Sindhur was a limited tri-services military operation aimed at neutralizing key terror infrastructure located in Pakistan and illegally Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation, and let me underscore, sir, these were not military targets. The operation focused on eliminating terrorists, and I am happy to state that Indian armed forces were successful in their mission. In retaliation, Pakistan failed field marshal attempted a series of drone and missile attacks against Indian schools, hospitals, and religious sites, not even sparing the Golden Temple. All of these were effectively neutralized by our military air defense grid. Though this operation achieved